Oh, hi guys, this is Mubina back with the important question of MCO01 organization theory and behavior, and also the textbook page number 4, and the textbook name is group behavior, and the question which is there is important. And also in this session which we are going to discuss is what is the process of conflict, what is a conflict process. As we are going to discuss the important questions which are coming for the examination, this is the most repeated question. I think 3 to 4 times it has been repeated. And the question is, what is the conflict process and describe it elaborately? That is the question. In order to understand the nature of conflict, one needs to examine the conflict process. The process consists of 4 stages. तो इसमें सबसे पहली बात आप conflict process में जानने की ये है कि mainly ये divide हुआ है stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. It has been mainly divided into 4 steps. And if you want to score better in the examination, the best thing over here is that is to draw the antecedent condition first stage, and the second condition is perceived conflict or the felt conflict, and the third is manifest conflict, that is conflict management strategy, stimulation, resolution, consequences. If you draw the diagram and if you write some points regarding to this only, it will be easy to score in the examination like a rock star. So it's better that if you keep this picture in mind with the main headings in it, that is the half of the answer for this. But if we are explaining the step by step, अगर आप explain करती हो step by step, so हम जाते हैं stage 1. Antecedent condition for conflict exists at the interpersonal level. One party plans to block the attempts of another party from achieving the goal. It is an interpersonal level. Interpersonal level means what? The communication or the conflict which is not taking place. एक organization से organization तक clash नहीं हो रहा है. यहाँ एक person से दूसरे person का clash हो रहा है. दूसरे पर्सन का क्लैश हो रहा है. वन पार्टी प्लान्स टू ब्लॉक द अटेम्प्ट्स ऑफ द अनदर पार्टी फ्रॉम अचीविंग अ गोल. यहाँ एक प्लान करते हैं, यहाँ वन पार्टी प्लान करते हैं कि दूसरी पार्टी को कभी भी कंटिन्यू करने नहीं देते. वन पार्टी ब्लॉक्स इट. what they do is they just block the entry of another party from achieving a goal. In organization, some potential danger and harm threaten the harmonious functioning and their existence. Harmonious existence, which means that what it is like a threatening of the harmonious function. For example, like A party है और B पार्टी है. A पार्टी कभी भी B पार्टी को रूल करने या कंटिन्यू करने नहीं देती, क्योंकि they think that it breaks the harmonious functioning. Harmonious function means, for example, like if I am running an organization, मेरे पिता, like my father is running that organization, my father will be satisfied only to give me that organization, isn't it? At the same time, he will be not at all interested in giving my organization to, giving his organization to a third person. That's what they are blocking the entry of another party for achieving a goal. And not only that, it is, and also they are and also what they are doing is they are blocking them. Why? Because they are thinking that they are breaking the harmonious functioning. That means what? एक अच्छी तरह से, अच्छी सीधी खासी तरह से चल रही हुई बिजनेस को वो ब्रेक कर दे के डर के वजह से, थ्रेटन, दे हैव अ काइंड ऑफ फियर इन देयर माइंड that whether it will break the harmony of the people the working in the organization. This stage is referred to as the source of conflict. ये stage हम क्या करते हैं, source of conflict के लिए ले सकते हैं. Example of these antecedent conditions are scarcity of resources, heterogeneity of members. Scarcity of resources, एक बात ये है कि क्या भैया रिसोर्स की कमी हो या ये रिसोर्स में कुछ कमी आ सकता है, वो वैसे ही डर होता है. और दूसरी बात ये हेट्रोजिनिटी ऑफ द मेंबर्स. हेट्रोजिनिटी ऑफ द मेंबर्स मीन्स, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, माय फादर विल बी इंटरेस्टेड गिविंग हिज ऑर्गेनाइजेशन टू मी, not to the other one, so he don't want that what our business property should be going to a third person. Heterogeneity of members means what? एक अलग या बाहर से एक आदमी का एंट्री की आने की उतनी अच्छी नहीं लगती, वैसे उस वक्त भी स्टेज 1
का डिफरेंस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. और डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स वैल्यूज परसेप्शन ऑल्सो डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट. डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स मीन्स व्हाट. जब मेरे पिता काम करते हैं तो उन्हें एक गोल होगा क्या, एक काम. जब भी ये बात एक दूसरे आदमी को कहते वक्त वहाँ डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है. डाइवर्सिफिकेशन मतलब मेरी जो ओरिएंटेशन हो, मेरी या प्रॉफिट एम हो, वो उसी तरह से दूसरे आदमी को समझ होना चाहिए. ये बहुत मंजूर नहीं. इट्स नॉट पॉसिबल दैट माई एम शुड बी क्लियर टू दैट पर्सन एंड ही विल बी वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. Then comes also degree of dependence between the groups. For example, like my father, मेरे पिता को मेरे ऊपर पूरा भरोसा होगा और he will be like what, giving happily giving everything whatever needed. एट द सेम टाइम एक बाहर वाले आदमी को वो डिपेंडेंस नहीं होगा, लाइक वो सक्सेसफुल कर पाएगा या नहीं, ऐसे सब. So that's what about the stage one, that is about the exchange of information. In short, what we can say, one party does not allow the other member a party to do what, to get into their party, blocking another party to get entry to the same party because of the fear of the harmonious functioning. वो सोचते हैं कि उनके एक अच्छी खासी तरह से चलने वाली बिजनेस में अगर कोई एक तीसरा वाला आएगा तो कुछ हो सकता है, तो वो है. और हेट्रोजिनिटी ऑफ मेंबर्स, वो नहीं चाहते हैं कि उनके पार्टी के मेंबर्स के अलावा और कोई भी आए. तो ये था स्टेज वन. स्टेज टू, एंटीसीडेंट कंसीडेंट. सो दिस अ काइंड इन्फॉर्मेशन दैट I will be creating the short notes for the section which I am taking. On one part it will be the explanation of the material and the other part it will be the short note. So antecedent condition must be perceived as threatening for conflict develop. The person who attempts assault with order perceives that might be done to him or feel potential damage. For example, antecedent condition means, antecedent condition एक ऐसी कंडीशन है जब एक पार्टी के मेंबर दूसरे पार्टी के मेंबर को आने के लिए नहीं देते हैं क्योंकि वो थ्रेटनिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट. दैट मीन्स व्हाट, तभी एक ही वक्त में वहाँ कॉन्फ्लिक्ट, देयर आर चांसेस दैट देयर कैन बी अ काइंड ऑफ फाइट एंड isn't it? At that time, the person who attempts to perceive this might be done to feel realizes the potential damage. अंडरस्टूड. पोटेंशियल डैमेज एक ऐसी अवस्था आती है कि ये आदमी सोचने लगता है क्या मैं उसके काबिल हूँ, ये क्या हो रहा है, यहाँ क्यों हुआ है. दैट टाइम व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट इज पर्सनलाइज्ड इट इज टर्म्ड एज द फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट. तो ये आदमी समझता है कि also to perceive. When it's personal and it terms are conflict, this line is important. When the conflict is personalized. जब एक आदमी सोचता है कि नहीं यार मेरी बिजनेस है लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हुआ, तो when it starts to react with the emotion that is known as felt conflict. Realization make him emotionally involve himself. वो सोचने लगता है whether I am fit for this, what is happening, is this that. When emotion is involved, that is known as the felt conflict. Now realization makes him emotionally involve himself. वो सोचता है नहीं यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, क्यों ऐसा हुआ, वैसे सब. So all these criteria will be involving in that. Emotional involvement makes him feel frustrated, anxious and tense, all of which are symptoms of conflict. ये सभी emotional involvement होते हैं. So it start to feel frustrated. Frustrated means गुस्सा आने लगता है, मेरे साथ ही क्यों हुआ, why is it happening, all those things. Anxious and tense, all of the symptoms are. और वही नहीं, वेन एवर देयर इज एन इमोशनल इम्बैलेंस होता है तब वहाँ एंशियसनेस होता है. एंशियसनेस मीन्स अब क्या होगा, अब क्या होगा. दिस अ काइंड ऑफ टेंडेंसी दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. वो सब. सो वॉट एवर कॉन्फ्लिक्ट दैट वी आर डीलिंग इमोशनली कैन बी सेड इन द क्राइटेरिया दैट इज द felt conflict. Now let's go to the third section, that is the very easy section. And so we have already know third section is manifest conflict, which is conflict management strategy, stimulation plus solution. So इनकी एक explanation है ये. Felt conflict means in the stage the party engages that was planned in stage one. So we all know. So this third in the stage a party engages in action that was planned in stage one. So आप जानते हैं कि plan one में क्या था. It is planning to block the attempts of another party. एक दूसरे पार्टी आ रहा है तो उसे ब्लॉक करना है. और सेकंड में हमने क्या कहा, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट. फेल्ट मीन्स व्हाट, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. क्या होगा वो
It's a kind of thinking. Now it comes to the third one, that is the most important. That is a party engages in action that was planned in stage 1. दैट मीन हम प्लान स्टेज 1 में प्लान क्या किए थे, हम ब्लॉक करेंगे, दूसरे पार्टी आते हैं, when another party is coming they will be blocking. But it is like what, an open announcement, that is that what we are not going to allow any third person to enter into our organization, or else we are not interested. another party, एक दूसरे पार्टी हमारे ग्रुप में आएंगे, हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो ये ओपनली वो कहते हैं. Overt conflict covers a full range of behavior from the subtle, indirect and highly controlled forms of intolerance. जब एक बात ऐसी होती है कि दूसरे बात में, एक आप समझे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, you're forming an organization named as A. If B is coming and saying that I'm interested to involve in that, and you are saying that no, it's not possible, we are not at all interested, a third party कभी भी नहीं आ सकते, हम कहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ एग्रेशन होगा. एग्रेशन मतलब गुस्सा. Violent and uncontrolled struggle. Violent and uncontrolled struggle means it's like uncontrollable, isn't it? दूसरी पार्टी को भी सह नहीं सकते, और वो क्या कह रहे हैं वो एक काइंड ऑफ टेंडेंसी है. सो ये सब मैं एक शॉर्ट नोट बनाऊंगी, तब आप उससे दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अ बेटर वे. नाउ कम्स टू द स्टेज 4, दैट इज द consequences. Now comes to the next fourth section, the interplay between the different forms of overt conflict behavior. Overt conflict behavior means हमारी concept होती है behavior की, हम क्या सोचते हैं, वो है overt conflict behavior and conflict handling strategy. और जब एक प्रॉब्लम होता है तो it depends on us that हम कैसे उसको हैंडल करते हैं. Strategies मतलब different ways of stimulation or resolution influence the consequences. The conflict finally results in an outcome that may be functional or dysfunctional. मेरे previous वीडियो में मैंने कहा है functional means if the अगर एक झगड़ा होकर both the team, दोनों टीम को कुछ उपयोग होता है तो हम उसे functional conflict कहते हैं. अगर एक झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट होते वक्त इफ़ देयर इज़ नो पॉजिटिव आउटकम, दैट इज़ नॉन एज डिसफंक्शनल. सो यहाँ 4 स्टेज में कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ 2 होती है. ये सिंपल है, यानी कि आप सोचिए कि आप और आपके दोस्त लड़ाई करते हैं, तब कि एक है दोस्ती बनेगी या तो दोस्ती तोड़ेगी, isn't it? The same time, either it will be going to make it. If it's in a positive way, then it's called functional. If it's not happening, it's called dysfunctional. So this is the thing. The 4-stage conflict process model is very useful framework to understand the conflict. So those two, my dear friends, you need not worry. It was a bit complicated, but it's very easy. So let's have a rewind it. So we started with the conflict process, that is like antecedent condition for conflict, and also perceived conflict, felt conflict. Antecedent means what? We don't allow another party to get into the organization. Perceived conflict and felt conflict. Perceived conflict means what? It's like a condition that it depends on the emotional stability, like I'm not fit for this or something like that. Manifest conflict, or the third condition, is the execution of the antecedent condition. Consequences, we all know for everything we face in our life there are only 2 consequences. Either it can be positive or negative, isn't it? Positive or negative. So I have created a short note for this. मैंने एक शॉर्ट नोट भी बनाया, तो आपके लिए ये बहुत ईजी होगी. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम MCO 01 पर वाइंड अप डालेंगे. देन वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन दी MCO 03.